Good morning, everyone. I think so. You are all waiting for next topic of neuroplasticity or rewire your burnt out brain with high vibrational guided meditation. So this is very interesting topic and very apt topic in today's world because most of the people are burnt out with work, with anything that's at home, and they are overdoing everything. They are multitasking, they are doing so many things at one time. So let's proceed with the topic. So our newborn current abilities are somewhat, you know, when a newborn is there, he can cry, sleep, eat, and do whatnot. Everything he needs is learning. He already learns these things when he is born with so many neurons, as many connections he is going to need. So what happens is that newborn is born with many connections. मैं हिंदी में भी बोलती हूँ. आज का टॉपिक है rewire your burnt out brain with high vibrational guided meditation. मतलब हम अपने ब्रेन को कैसे रीवायर कर सकते हैं जब हमारा ब्रेन जो है बिल्कुल खत्म हो गया होता है, मतलब हम बहुत ओवरवर्क कर लेते हैं, और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं या उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं. तो हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी न्यूरॉन्स होते हैं. हमारी एबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, लेकिन हमारा ब्रेन डेवलप होता है. एक बच्चा जो है वो रोता है, सोता है, खाता है, सब कुछ करता है क्योंकि उसका ब्रेन ऑलरेडी थोड़ा सा डेवलप होता है और उसके जो है न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं. They can go from any spot of the brain to every spot with as many connections as possible. Means about the newborn. That's a brilliant idea, brilliant design by Mother Nature, because it gives us this incredible amount of possibilities for the future. But there's a catch. That gift of possibility doesn't last forever. Like childhood itself, it comes to an end. For each skill, we get a golden period when learning is easy. Periods in development when we have heightened plasticity for shaping neural circuitry, and we refer to those as critical period. Learning to play guitar as a child is like opening a door, and as a child, we have lots and lots of doors. During this time, our neural circuitry gets fine-tuned. Our brain learns about which connections are going to be important through a use or lose it principle. Certain connections become reinforced and sustained and enhanced at the cost of others. Those connections that aren't being activated, they are learned not to be necessary and they get pruned away. They actually die off and the open doors begin to close. So जब एक बच्चा जो होता है वो न्यूबॉर्न बच्चा होता है, बहुत सारी नई चीजें सीखता है और उसके न्यूरॉन्स इतने डेवलप होते हैं कि वो बहुत सारे नई चीजें सीखता चला जाता है और उसके कनेक्शन नए नए कनेक्शन बनते जाते हैं. जब वो गिटार, जैसे मान लीजिए उसने गिटार सीखा और उसका एक डोर ओपन हुआ, ऐसे ही बहुत सारे डोर्स ओपन होते हैं और वो बहुत सारी चीजें सीखता है और उसके जो कनेक्शंस हैं वो नए नए बनते चले जाते हैं, नई नई नसें बनती चली जाती हैं, जिससे कि वो बहुत सारी चीजें सीखता है. जो जिन नर्व्स की जरूरत नहीं होती है उसको काट फेंक करके अलग कर देता है. तो ये न्यूरॉन्स जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं. कुछ बनते हैं, कुछ बिगड़ते हैं. तो वो कुछ दरवाजे ओपन होते हैं, कुछ दरवाजे बंद होते हैं. As an adult, if you have never played, you have lost that door. अगर आप उसी गिटार को आगे बड़े होकर के नहीं बजाते हैं
तो आप उस डोर को बंद कर देते हैं और आप उसको भूल जाते हैं. So इसी तरह से similarly you learn a language, but if you don't practice you will lose that ability. If a person doesn't begin learning something else like violin, he will, before he is about 7 years, he will probably never play the same music. If you have never had connections to begin with, you can try as hard as you can. So, अगर आपने थोड़ा बड़े होकर के वायलिन नहीं बजाया या गिटार नहीं बजाया, तो आगे जाकर के आपको बजाने में परेशानी हो सकती है. So, हम यही चीज बड़े होकर के कैसे सीख सकते हैं? You are never going to be there. You will never be a small child again. So what we can do to change it? What if we could change our brain to learn as easily as a child? हम किस तरह से अब दोबारा से सीख सकते हैं, या हम वायलिन बजा सकते हैं, हम गिटार बजा सकते हैं? So it's called neuroscience, and it is very, very beautiful science. We can, to some degree, do the impossible and reopen critical period to say we allow changes to happen later on and in ways that we didn't anticipate would be possible. Scientists are learning how we learn, and that may soon give us a chance to reopen these doors. But there's another side of the coin. Just as we need to be able to learn to adapt, we also need stability. So हम जो भी एक्टिविटी हम बचपन में करते थे, वो हम कैसे बड़े होकर के कर सकते हैं, उसको दोबारा कैसे सीख सकते हैं, और उसको किस तरह से अपने ब्रेन को फिर से डेवलप कर सकते हैं जो हम बचपन में डेवलप कर रहे थे. साइंटिस्ट उस पर बहुत काम कर रहे हैं और इस साइंस को न्यूरो साइंस कहते हैं. न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है उस तरीके को कहते हैं. बट देयर इज अनदर साइड. वी नीड टू लर्न टू अडैप्ट एंड वी आल्सो नीड स्टेबिलिटी. तो हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए. जो हम चीजें सीखते हैं उसको हमेशा सीखे रखें, उसको प्रैक्टिस कर करके. उसके तरीके हैं, आप किस तरह से उस एबिलिटी को याद रख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस करके, या और भी तरीके हैं उसको करके, लाइक रिपीटेटिव टास्क करके उसको भी सीख सकते हैं. Now, our brains are truly amazing, aren't they? Have you ever watched one of those specials on someone who experienced an amazing, unexpected recovery after a traumatic brain injury, stroke, or other brain damage? तो हमारा ब्रेन बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है. और सरप्राइजिंगली जब कोई, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि ब्रेन डैमेज के बाद एकदम से कैसे एक इंसान रिकवर करता है, वो इसी वजह से करता है क्योंकि हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स हैं वो डेवलप होते हैं, वो फिर से नए बनते हैं. तो न्यूरॉन्स जो है जब नए बनते हैं तो आप स्ट्रोक से, ब्रेन स्ट्रोक से या किसी भी ब्रेन की इंजरी से रिकवर कर सकते हैं. So now, what is the meaning of neuroplasticity? Neuroplasticity refers to the brain's ability to adapt. Our brains are truly extraordinarily, unlike computers, which are built to certain specifications and receive software updates periodically. Our brain can actually receive hardware updates in addition to software updates. Different pathways form and fall dormant, are created and are discarded according to our experience. When we learn something new, we create new connections between our neurons. We rewire our brain to adapt to new circumstances. This happens on a daily basis, but it's also something that we can encourage and stimulate. So, talking about learning plasticity, how the brain learns,
how skills become habit, that we will talk about more. So न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है हमारी ब्रेन की जो एबिलिटी है वो किस तरह से अडाप्ट करती है, नई नई चीजों को याद करती है। कंप्यूटर में क्या होता है, हम उसको प्रोग्राम डाल देते हैं और वो अपडेट हो जाता है, लेकिन हमारे ब्रेन में सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है और हार्डवेयर भी अपडेट होता है, और वो अपडेट होता रहता है जैसे जैसे हमको वहां पे इनपुट मिलते रहते हैं। तो वहां पे नए नए सर्किट फॉर्म होते हैं, नए पाथवेज फॉर्म होते हैं, नए नर्व्स डेवलप होती हैं, और नई नई चीजें, नए नए सिनाप्सिस डेवलप होते हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है और नई नई चीजें सीखता रहता है। Now structure of the brain, what to do, but what to do these things actually look like in the brain structure actually, ये किस तरह का दिखता है? So we saw already we know that we can always go to the Google and see so many pictures. So structurally, the brain is composed of neurons and support cells. The neurons communicate with each other through electrical signaling, chemical, electrical signaling. The most important aspect of that is that these communications are transferred across the structures known as synapses. That's where learning happens. That's where memories are stored. And as we were talking about, that's where this pruning process goes on. This use it or lose it process goes on during development. So in fact, the structure of brain is packed with these neurons, packed with these synapses, and also with long connections. Some of those you can actually see when you see a brain structure. Even in my shorts also, I have created a short, and that also circuits are seen. You can just have a look at that short. So the brain connections links different parts of the structure to each other, and those are the beautiful colors that look like us, and so on. And these are pathways, but those are made of hundreds and thousands of connections from individual neurons. तो हमारा ब्रेन किस चीज का बना होता है? हमारा ब्रेन जो है बहुत सारे न्यूरॉन्स, बहुत सारे सिनाप्सेस, बहुत सारे न्यूरॉन्स और सपोर्ट सेल्स से बना होता है, और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे बात करते हैं? वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होती है और केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होती है। तो हमारा जो न्यूरॉन्स है, हमारे जो नर्व्स है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और कैसे ट्रांसफर होता है कम्युनिकेशन? सिनाप्सिस से। तो जब सिनाप्सिस से कम्युनिकेशन होता है तो क्या होता है, वहां पे मेमोरी स्टोर हो जाती है, और जब हमारी मेमोरी स्टोर हो जाती है, वहां पे जिस सिनाप्सिस की, जिस न्यूरॉन्स की जरूरत होती है वो रखे जाते हैं, और बाकी सब काट के हटा दिए जाते हैं या वो डेड हो जाते हैं। तो ये हमारा जो डेवलपमेंट है ये चलता रहता है। तो हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स, सिनाप्सिस और इलेक्ट्रिकल सर्किट से भरा हुआ है, पूरा पैक्ड है। तो हम जैसे भी काम करते हैं, इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे लिए काम करते रहते हैं। ये सर्किट हमारा चलता रहता है। There are more neurons in the brain than the stars in the universe, but it isn't true. So this is only axons and wiring. Everything is wired inside our brain. So
Is the brain fundamentally unwired at the start? The brain is not fundamentally unwired at the start, but it is amazing. If you just take a look at the one part of the brain, what happens is there are pathways. Suppose it is eyes, there will be pathways to the brain that will connect your nerves and you can see. So there are certain things, certain areas where your visuals are connected. Similarly, your other part of the body, they are connected to different part of the brain. So this way they form different pathways, and they are like roads. If you can say, they are roads with street signs on them. So these growing connections or the growing actions follow these pathways. But then the amazing thing is, once the connections form between these long distance region of brain, there is period of overproduction and pruning, and that's what happens in ब्रेन. तो क्या होता है, जब हमारा ब्रेन जो है वो इंटरकनेक्टेड है हर एक ऑर्गन से और हर एक टीचिंग से, जब वो जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो आपके ब्रेन से कनेक्ट हो जाते हैं, किसी लाइक आंख का अगर आपके ब्रेन से कनेक्ट हो गया तो जितना आपको देखना है उतना ही देखेगा। आपने मान लीजिए सीखा कुछ, उसके लिए अलग तरह के पाथवेज बनेंगे, उसमें आप जितना सीखेंगे वो आपके ब्रेन में डेवलप हो जाएगा। जब तक आप उसको सीखते रहेंगे वहां पे डेवलपमेंट चलता रहेगा, वहां पे नए नए न्यूरॉन्स बनते रहेंगे, नए नए सिनाप्सिस बनते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप सीखना बंद करेंगे या उसको भूलेंगे तो वो सिनाप्सिस जो है वो खत्म होने लगेंगे या डाई हो जाएंगे, और उसके ऊपर दूसरे न्यूरॉन्स बनने शुरू होंगे जब आप नई चीजें सीखेंगे। So how does the brain, why does the process of human brain development seem inefficient? ऐसा नहीं है, ह्यूमन ब्रेन जो है डेवलप होता रहता है, इट इज नॉट इनएफिशिएंट, इट इज परफेक्टली एफिशिएंट, बट यू हैव टू टेक एफर्ट। आपको एफर्ट लेना ही लेना है ताकि आपके जो है न्यूरॉन्स डेवलप होते रहे। आपको नए नए न्यूरॉन्स की फाउंडेशन रखनी पड़ेगी। यू हैव टू draw, you have to develop your new neurons so that you can learn new things. When you learn new things, new neurons develop, new synapses develop. So brain is 2% of body weight, but gets 20% of it, but 20% of the blood flow and 25% of glucose. Why the brain is doing like this? Because so much of about brain development, it seems it gives rise to complexity of the brain, especially in the case of humans. So when we are developing, what our brain does is first go through this period of overproducing our neurons and synapses, and then through experience, through learning what's important in the environment. What synapses are getting activated, those get to stay, and everything else gets snipped away because it's inefficient to keep all those synapses. So why we would go through this entire process of overproducing and then pulling back? That's really the core of what the function of childhood is in the human. So if you think about human as a species, we are amazing in many ways. We can live anywhere on the planet. We can speak any language. We can eat a number of foods and so on, and live very well. Some of the reasons why we can do this because of this long period of brain development that we have. So the brain overproduces. It's like throwing a big fishing net out into the ocean because you're not sure which fish you are going to end up. You are not sure what language people are going to speak to you. So you are ready
you've got all your bases covered, and then depending on what signals are coming into the brain learns. Okay, I'm going to keep these synapses, but I'm going to get rid of these also. So if I'm going up in a Japanese speaking household, I'm going to hang on to those synapses. That helps me understand Japanese, but getting rid of the synapses that support other languages. That because that's really efficient. So it really is this developmental period, a really long one in humans that gives rise to our incredible adaptation to our particular environment. So क्या होता है हम बचपन से लेकर के एडल्टहुड तक ब्रेन को डेवलप करते रहते हैं और जो ब्रेन के एरियाज हमारे काम में आते हैं हम उसको रखते हैं बाकी सबको हटा देते हैं जैसे कि अगर हम जापानीज घर में पैदा हुए हैं तो हम जापानीज लैंग्वेज का वो सीखते रहेंगे और दूसरी लैंग्वेज को नहीं सीखेंगे वो सीखने का जो भी एरिया है उसको हम हटा देंगे उस न्यूरॉन को हम हटा देंगे हम सिर्फ वो न्यूरॉन रखेंगे वो सिनेप्सिस रखेंगे जिससे हम जापानीज आगे भी बोलते रहें तो हमें हम उन न्यूरॉन्स को और सिनेप्सिस को रखेंगे जो हमारे लिए आगे भी जरूरत के होंगे तो इसलिए हमारा ब्रेन बहुत ही डेवलप है उसकी इतनी अच्छी एबिलिटी है कि वो उन न्यूरॉन्स को रखता है जिनकी जरूरत आपको आगे भी पड़ेगी और नए नए न्यूरॉन्स को डेवलप करता रहता है क्योंकि हमारे साथ हमेशा नए नए लर्निंग के साथ डेवलप करते हैं और बाकी जितने भी जरूरत के नहीं होते हैं उनको हटा देते हैं नाउ वी कम टू अब आपने now you have learned about neuroplasticity. What is neuroplasticity? Let's come to stress busting. What is burnout actually? Let's see. So neuroplasticity is the ability of the brain to form new connections and pathways and change how its circuits are wired. Neurogenesis is even more amazing ability of the brain to grow new neurons. So this is what the concept is. Now the concept has changed. This is the same concept. Before they used to think that the neurons जो है वो बचपन में ही up to 7 years up to 7 years ही आपके डेवलप होते हैं उसके बाद नहीं डेवलप होते हैं बट न्यू theory says that they keep on developing all of the time जब तक आप बड़े होते हैं तब तक आपका डेवलप होता रहता है और इसके डिफरेंट तरीके हैं उससे आप डेवलप कर सकते हैं now let's come to how we should take care of this burnt out. What is burnt out of brain? Burnt out brain. अभी तक के इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है क्योंकि पहले भी मैंने ये सब बताया है कि किस तरह से हम न्यूरोप्लास्टिसिटी यूज करते हैं और इसमें किस तरह से हम रीवायर कर सकते हैं अपने ब्रेन को सो वी कैन ऑलवेज रीवायर आवर ब्रेन and develop new meditation new neurons and synapses. If you have any questions then you can always ask me up to now. We are excited. So I'm just checking up with this burnout. Now
What is burnout? Burnout often results from extended period enduring the emotional stress precipitated by unaccomplished expectations or failure to fulfill unreasonable demands. The symptoms can include intensified emotional exhaustion, physical fatigue, lowered self-worth, changes in eating and exercising habits, social withdrawal, sleep disorders, anxiety and depression. तो burnout क्या है? Burnout जो है हमारे किस वजह से होता है? हमारे पास जब इमोशनल स्ट्रेस होता है, जो किस वजह से होता है? जो फेलियर से होता है, आपने जो कुछ भी सोचा है वो आप कर नहीं पाते हो, आप जो है बहुत सारी चीजें सोचते हो और कर नहीं पाते हो, फिर इमोशनली आप थक जाते हो, फिजिकली आप थक जाते हो, आपको लगता है कि आप ये कर नहीं सकते हो, आप खाना उसी की वजह से आप खाना नहीं खाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप लोगों से बात नहीं करते हो और आपको नींद नहीं आती, आप बहुत चिंता करते हो और आपको डिप्रेशन होता है. So if you are burnout, your brain has rewired to survival mode. अगर आप थक गए हैं तो आपका जो बर्नआउट स्टेज आ गया है, जब बहुत ज्यादा थक गए हैं तो आपका ब्रेन जो है सर्वाइवल मोड पे आ जाता है. तो देयर आर स्पेसिफिक एंड रिप्रोड्यूसिबल पैटर्न of changing neural activity and brain connectivity associated with stress buildup and leads to burnout. Since burnout can be a result and cause of chronic psychosocial stress, it can overwhelm the brain, causing noticeable changes in its anatomy and functioning. These changes result from repeated activation of specific neural activity patterns associated with buildup of stress over time. So, आप जो है कोई काम कर रहे हैं, कई बार लोगों के ऑफिस में भी ओवरवर्क होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो कि आपके दिमाग में बिल्डअप हो जाती है और आप जो है अपना नॉर्मल रूटीन काम नहीं कर सकते. Recently, I came across a person who was overworked and she had tremendous emotional disturbance. She was crying all the time. She was unable to understand that's what she has to do, and she was unable to take decision. So ये burnout symptoms है, and for that you need specific help also. तो अभी recently मेरे पास एक केस आया था जिसमें कि वो इंसान जो है वो इतना थक गया था कि वो रोता रहता था, हर समय बिना बात के रोता था, उसको समझ में नहीं आता था कि वो क्यों रो रहा है और वो काम भी नहीं कर पा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आगे बढ़ूं. So chronic stress and the brain. Experiencing burnout is a sign that the brain has rewired to survival mode. This means it's prioritizing the activation of reactive network over more reflective ones. So जब आपके ब्रेन जो है वो फिर जब आप ओवरवेल्म हो जाते हो, आप बहुत ज्यादा बर्नआउट हो जाते हो, तो क्या होता है, आपके सर्वाइवल मोड पे आ जाता है कि आपको ये सब काम नहीं करना, आप बिल्कुल वो काम छोड़ना शुरू कर देते हो, तो वो नर्व्स जो है वो इफेक्ट हो जाती हैं और आप जो है काम नहीं कर पाते हो. तो इसमें क्या होता है, थिनिंग ऑफ ग्रे मैटर इन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. सो आपके ग्रे मैटर जो है वो थिन होने लगते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में. दिस एरिया ऑफ द ब्रेन हेल्प अस विद लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्शियस प्रोसेसेस. तो ये जब थिन हो जाएगा तो आपका जो है डिसीजन मेकिंग जो है वो कम हो जाएगा. इट्स हेल्प अस रिफ्लेक्ट, गिव अस पर्सपेक्टिव एंड अलाउ अस टू स्टोर लॉन्ग टर्म मेमोरी. Without sufficient activation in prefrontal cortex, we lose important neuroconnections and become more vulnerable to experiencing mood swings, losing focus and making mistakes. So, जब हमारे यहाँ पे ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं तो क्या होता है कि ओवरलोड हो जाता है. ओवरलोड हो जाता है तो हम मूड स्विंग्स हमें होने लगते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हो, आप ज्यादा गलतियां करते हो. Then areas like amygdala show increased gray matter with chronic stress.
The amygdala is the part of emotion-driven reactive neuronal network in the lower part of the brain, which becomes activated during our fight or flight response and help us look for threats. Having an overaction in this part of the brain may lead to negative fearfulness and hopeless thought pattern. amygdala क्या है? सर्वाइवल के लिए होता है और इसमें जब एक्टिविटी बढ़ जाती है तो आप जो है फ्लाइट ऑफ फाइट मोड में चले जाते हो और उसकी वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको डर लगता है और आपको जो है उम्मीद का दामन आप छोड़ देते हो। आपको you have disappointment, you have stress, you have so many things. Now, if this continues, so what happens? Neural pathways become more stronger because the brain wires for better efficiency and adapts to protect us, calm us, reflective, logical, high order processing in the prefrontal cortex becomes weak. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सारी चीजें वीक हो जाती हैं, कनेक्शन जो है वो कम होने लगते हैं, तो आपके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, यू आर नॉट काम। एंड ये जो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है? आपको अवॉइडेंस क्रिएट करता है। दिस मेक्स वन लूज टच विद देयर रिफ्लेक्टिव ब्रेन एंड स्टार्ट फाइंडिंग डिफिकल्टी इन ओवरकमिंग चैलेंजेस। तो आप उन चैलेंजेस को काम नहीं करने, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, तब आपको सेल्फ डाउट होता है और आप जो है होपलेस फील करते हो। तो इसी को बर्नआउट कहते हैं और बहुत सारे वर्क प्लेस में ये होता है, होम सिचुएशन में भी यही होता है। होम सिचुएशन में इसलिए होता है क्योंकि एक या दो इंसान पूरा काम कर रहे होते हैं पूरे परिवार के लिए। फॉर एग्जाम्पल, one home is having one person who is working day and night. For example, lady of the house, she is working from morning till night, looking after the kids, taking care of the household chores, then going out, buying things and coming back home, again cooking, again taking care of the children and so on. So burnout happens with the lady of the house also. Now, burnout happens in the workplace also, where employees are overloaded with work and they are unable to cope with the situation, with the workload, and they are given tasks to fill in a limited time. Then they will have this burnout situation when they are unable to, cope with the stress. And this is called chronic stress. This is chronic stress, which may be unnoticeable as unhealthy behaviors become habit and minor disappointment get ignored, which all accumulate over time. Signs and symptoms can vary from person to person. हर इंसान का अलग-अलग signs होता है, अलग-अलग symptoms होता है. So what are burnout alerts? That is chronic stress. आपका बहुत ज़्यादा होता है. It is a sign that something must be changed. So you have to, find the root cause of the stress and addressing it, and that will help the brain to return sharper, better, and happier. So since we are already, on time restrictions, so I will go faster. So prolonged stress correlates with structural increases in the density and speed of neuron-to-neuron connections in the emotion-driven reactive networks of the lower brain and corresponding decreases and connections in prefrontal cortex, conscious and reflective control centers. तो क्या जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें डेंसिटी बढ़ जाती है, स्पीड न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन की इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप उस पर रिएक्ट करने लगते हैं, फिर लोअर ब्रेन का करस्पॉन्डेंस कम हो जाता है,
कहाँ से कम हो जाता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया में, जो कि हमारा रिफ्लेक्टिव कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पे हम अपने इमोशंस दिखाते हैं. So the explanation of these changes is attributed to brain's neuroplasticity, defined by the phrase neurons that fire together, wire together. So ये मैंने पहले भी बताया था, मेरा टॉपिक पहले भी था. The brain literally rewires to be more efficient in conducting information through circuits that are most frequently activated. तो इसका मतलब ये है, जो न्यूरॉन्स जो है वो एक साथ फायर करते हैं, वो एक साथ जुड़े होते हैं. तो जितने जो भी न्यूरॉन्स आपके जुड़े होंगे वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे. अगर वो गलत तरह के न्यूरॉन्स हैं, स्ट्रेस रिलेटेड न्यूरॉन्स हैं, तो वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे और ज्यादा वो एक्टिव हो जाएंगे और आपको उसी तरह का इफेक्ट देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन बर्नड आउट स्टेट में, बर्नड आउट ब्रेन में वो न्यूरॉन्स और थिक हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, ताकि आपको जो है वो रेस्पॉन्सेज मिलते हैं. जैसे आपको भूख नहीं लगती है, आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होता है, आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है. तो व्हेन स्ट्रेस इज फ्रीक्वेंट, the more frequent activation of neural pathways to the lower stress reactive brain, which results their strengthening from enhanced firing, that is dendrites, synapses, and axons. These pathways can become so strong that they become your brain's fast route to its lower reactive control centers. The stressful burnout state, when the lower reactive brain is in charge, overcomes the calm, reflective, and productive higher neural process in PFC, prefrontal cortex, the preferred brain local for control of behavior and emotional self-management. तो आपको इसको जो है, जब बहुत ज्यादा आपके स्ट्रेस हो जाता है, तो ये न्यूरॉन्स और सिनाप्सेस और डेवलप हो जाते हैं और आपको जो है स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी आपको सिम्टम्स हैं वो आपको दिखाई पड़ने लगते हैं और वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते, मतलब आपसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो न्यूरॉन्स, वो एक्सॉन्स, वो सब आपके बहुत स्ट्रांग हो गए होते हैं. तो इसी को आपको मैनेज करना है. यू हैव टू मैनेज दिस PFC and solve your problems. Then how to do that? 6 key components that contribute to burnout. मैं आपको कुछ components भी बताती हूँ जिसकी वजह से burnout होता है. Workload, control, reward, community, fairness, and values. So these are the components of burnout. Then what are the causes of burnout? Burnout is defined as the end of long-term chronic stress and is a syndrome represented by 3 dimensions: mental fatigue or emotional exhaustion, negative feeling and perception about the people one works with, or depersonalization and a decrease in feelings of personal accomplishment. So ये क्या है? जब आप अपने आप को उतना अच्छा नहीं मानते, आप बाहर के लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, तब ये बर्नआउट होता है और आप जो है मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब ये बर्नआउट का सिम्टम होता है. There are many types. What individual factor contributes to burnout? Burnout occurs as a result of complex interplay between individual and organizational factor. हर एक के साथ अलग-अलग तरह से burnout होता है. And how can you avoid burnout? Embrace your stress. It's a lack of control and makes most of us anxious. Then exercise, eat a balanced diet, build resilience. Resilience protects us from negative effect of stress. Practice good sleep habits, express gratitude, and if it is more, then you have to ask for help. So क्या 7 चीजें हैं जिससे हम अपने बर्नआउट को अवॉइड कर सकते हैं? आप अपने स्ट्रेस को जो है अपने गले से लगाइए,
आप चिंता कम करें और दूसरे जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको दूर रखें। थोड़ा एक्सरसाइज करिए, खाने पे ध्यान दीजिए, ठीक टाइम पे सोए, लोगों के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करें, आभार शो करें, और अगर आपको ज्यादा हो जाता है तो आपको जो है हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प भी जरूर लें। तो reset your brain's default neural network from retreat to ignite. So you can do that with the help of guided meditation. अब हम meditation पे आते हैं। So everybody ready for the music meditation? We'll do a short meditation and try to finish within the stipulated time. So breathe in and breathe out. Everybody ready? Yes. अपने आप को रिलैक्स करें, बैठ जाएं और लेट जाएं और सांस अंदर ले और बाहर छोड़ें। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Close your eyes and feel your toes relaxing. Your toes are relaxed, your ankle are relaxed. आपका पैर रिलैक्स है, आपके घुटने रिलैक्स हैं और आपका पेट पूरी तरह से रिलैक्स है, आपका लोअर बॉडी रिलैक्स है। So your toes are relaxed, your knees are relaxed, your lower body is relaxed, your stomach is relaxed, your chest is relaxed, your shoulders are drooped down and totally and completely relaxed. आपका सीना रिलैक्स है और आपके कंधे पूरी तरह से रिलैक्स हैं। Your throat is relaxed, your cheeks are relaxed, your jawbones are relaxed and drop down. Your eyes are relaxed and they are closed shut till I say open your eyes. आपका गला रिलैक्स है, आपकी चीक्स रिलैक्स है, आपकी जॉ बोन जबड़ा रिलैक्स है और आपकी आंखें रिलैक्स है और बंद है जब तक मैं न कहूं ओपन योर आईज। आपका माथा रिलैक्स है, आपका पूरा शरीर रिलैक्स है। Breathe in and breathe out very slowly and slowly. सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें बहुत धीमे धीमे। अब अपने ऊपर एक प्रकाश पुंज को देखें जो आपके फेवरेट कलर पे है। Now imagine a bright light above your head which is in your favorite color. The color you love, उस कलर में है जो आपको बहुत पसंद है। Forming around you, sparkling and shimmering around you. ये आपके चारों ओर है, चमक रहा है। ये रंग वाला प्रकाश पुंज आपके चारों ओर फैल गया है। ये आपके सिर पे है और आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और जैसे ही अंदर प्रवेश करता है आप रिलैक्स हो जाते हैं। The moment this color, this light ball is on your head and enters into your body, your whole body relaxes. This relaxation flows all through your body, relaxing each and every part of your body. This color is spread into each and every part of your body. ये रंग आपके
पूरे शरीर में फैल गया है। हर एक हिस्से में ये रंग भर गया है। Feel this color spreading each and every part of your body. Your body is relaxing from the top. Your forehead is relaxed with this color of light, your favorite color. It is filling each and every part of your brain. It moves down and colors each and every part of your face, then your shoulders, then your stomach, and then your whole of your lower body. अब ये प्रकाश, आपके फेवरेट रंग का प्रकाश आपके सिर पे है, आपके माथे को कवर कर रहा है, आपके गालों को कवर कर रहा है, आपके शोल्डर्स को कवर कर रहा है और आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपके सीने को कवर कर रहा है, अंदर ही अंदर फैलता जा रहा है। आपके स्टमक को भर दिया है इससे रंग से, आपके फेवरेट रंग से। आपके लोअर बॉडी को भी पूरी तरह से इस रंग से भर दिया है। आपका सारा टेंशन खत्म हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। आपकी आत्मा इस रंग से भर गई है। योर सोल इज कवर्ड विद दिस कलर, ब्यूटीफुल कलर, योर फेवरेट कलर। आपकी थकान पूरी तरह से खत्म हो गई है। योर फैटीग is cleared. Now, this color is now coming out from the bottom of your feet into the earth, where it travels all the way to the center of the planet, grounding you, connecting you with the earth. ये रंग आपके पैरों के तलवे से निकलता हुआ धरती के सेंटर में समा गया है और आपको ग्राउंड कर रहा है। अपने साथ ये सारी वो चीज ले जा रहा है, वो एनर्जी ले जा रहा है जो आपके लिए जरूरी नहीं है। आपकी थकान जो कि आपको परेशान कर रही है। सो दिस एनर्जी is taking away, carrying away all the negative energy, all the fatigue that is not beneficial to you, that you are holding into you, that is being released and sent to the center of the earth to be renewed, to be transmuted into something positive. Just let go. तो ये शक्ति जो आपके अंदर भरी हुई है, नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, वो सब पैरों द्वारा निकल करके धरती में समा गई है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब आप निकाल करके इसके द्वारा, पैरों द्वारा निकाल करके धरती की ओर भेज दें। जस्ट जाने दें, बहने दें। जितना भी आपके अंदर स्ट्रेस है, थकान है, वो सब धरती में जा रही है ताकि वो बदल सके, पॉजिटिव एनर्जी में बदल सके। Now, imagine yourself in an elevator.
इन अ लिफ्ट। अब आप अपने आप को एक लिफ्ट में महसूस करें जो ऊपर की ओर जा रही। वो ग्लास की लिफ्ट है। इट इज अ ग्लास लिफ्ट। अब ये लिफ्ट जो है नीचे जा रही है। आपके सिर में के द्वारा बनी हुई ये लिफ्ट नीचे जा रही है। आप इस लिफ्ट में घुस गए। You are entering the lift, which is created in your mind. Visualize that lift. You enter that lift. You are the boss. You are boss in that lift. This lift, this small room where you are, is your safe place, where you feel protected and safe. ये छोटा सा कमरा जो एक लिफ्ट के रूप में है, वो आपका सुरक्षित स्थान है। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप काम महसूस कर रहे हैं। आप पावरफुल महसूस कर रहे हैं, शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। ये कमरा आपका बहुत ही सुंदर कमरा है। This room in the form of lift is your calm place, peaceful place, powerful place where you are feeling safe. Now you are going down. आप नीचे की ओर जा रहे हैं। You are going down and down and down, relaxing, relaxing. From the top of your head to the toe. This is the room of the lift where you are safe and relaxed and peaceful and calm. And you are going down in your body towards your feet. अब ये लिफ्ट आपके सिर से लेकर के पैर की ओर जा रही है। इस लिफ्ट में आप सुरक्षित हैं, पीसफुल है, काम है, पावरफुल है। आप रिलैक्स हैं। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। Feel the calmness, feel the safety in this room. Feel the texture of the room. Look around. You find something to eat or drink in this safe place. अब आप यहाँ पे इस कमरे में, इस लिफ्ट में खाने की चीज को देखते हैं जो आपका फेवरेट फूड है। पीने को देखते हैं जो आपका फेवरेट ड्रिंक है। आप आगे बढ़िए और
उस हेल्दी फूड को खाइए और उस हेल्दी ड्रिंक को पीजिए. Now you have seen the food you like and drink you like. Go ahead and eat that food and drink that drink that you like. That drink is water. वो ड्रिंक क्या है? वो पानी है. आप उसको पी करके फ्रेश महसूस कर रहे हैं. Drink that water and you are feeling fresh. Feel the color of the room, your favorite color. Now lie down in that room. There's a bed and you lie down. आपने खाना खा लिया, अब आप लेट जाइए. उसी रूम में लेट जाइए. आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. आप आराम से लेट गए. आपको बहुत अच्छा लग रहा है. You have to lie down on a couch, on a space which is very safe and calm, and you are feeling relaxed. Now you have to learn and transform faster than ever. अब आपको ट्रांसफॉर्म होना है और बहुत जल्दी से ट्रांसफॉर्म होना है. So let's begin experiencing burnout that can be very traumatic experience on its own, and it can be even more challenging for creative and artists. Burnout is a state of physical and emotional exhaustion, and that as well as other kinds of exhaustion can be healed by taking good care of ourselves. अब आप बर्नआउट को महसूस कर रहे हैं, जो कि एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है आपके लिए. ज्यादा चैलेंजिंग है उन लोगों के लिए जो आर्टिस्ट हैं, जो क्रिएटिव्स हैं. आपके लिए ये मानसिक और शारीरिक थकान है. और भी तरह का थकान जो है आप अपनी केयर करके उसको हील कर सकते हैं. और आज आप हील कर रहे हैं. यू आर ऑलरेडी हीलिंग just by being here today. You are already taking care of yourself, giving yourself a room to recover from burnout, to be able to feel more energized and optimistic again. You are on the right path. आप यहाँ पे हील हो रहे हैं, इस कमरे में हील हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी देखभाल खुद कर रहे हैं. आप इस रूम में रिकवर होने के लिए आए हैं. आप बर्नआउट से रिकवर हो रहे हैं और आप बहुत एनर्जाइज महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं. आप सही राह पे. Now you jump into the control room of your body. The control room that may have screens on the wall with lots of buttons, maybe dials and switches. Perhaps it's looked like a sound table full of knobs. However, this control room appears to be perfect. अब आप एक कंट्रोल रूम में, जहाँ पे बहुत सारे स्विचेस हैं, बहुत सारे नॉब्स हैं और बहुत सारे डायल्स हैं इस पैनल पे. Now see these screen in front of the
कंट्रोल रूम, इस कंट्रोल रूम के सामने एक स्क्रीन को देखें। नाउ सी वन डायल, एक नॉब को देखें जो आप घुमा सकते हैं। उस डायल का नाम है फिजिकल एनर्जी। उसको आप घुमाएं और अपनी फिजिकल एनर्जी को देखें। वो एनर्जी अच्छी हो गई है, आप उसको पॉजिटिव की तरफ डायल कर रहे हैं, हाईएस्ट नंबर की तरफ डायल कर रहे हैं। नाउ यू डायल दिस dial which is related to physical energy. It is written on the dial that is physical energy, and turn the dial to the highest possible number and turn the safety on so it doesn't move to another number. Your physical energy is to the maximum and it is safe and locked. You are energetic physically. Your physical energy is elevating with that dial all the way up. Now move on to next dial. आपने ये डायल हाईएस्ट नंबर की तरफ डायल कर दिया है। ये फिजिकल एनर्जी को आपका बढ़ा रहा है। आपकी फिजिकल एनर्जी सबसे हाई नंबर पे है और आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। आप इसको लॉक कर दें ताकि ये फिर से कम ना हो, ये सिर्फ एक जगह पे टिक जाए, हाईएस्ट नंबर पे, डायल के हाईएस्ट नंबर पे टिक जाए और आप फिजिकली अच्छा महसूस करें, शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करें और आपकी थकान दूर हो गई। देन सी द अदर डायल, दूसरा डायल को देखें जिसका नाम इमोशनल एनर्जी है, मानसिक एनर्जी, मेंटल एनर्जी, hope, creative power, skill. Now, this dial, increase it to highest number and lock it. आप इस नॉब को, इस डायल को हाईएस्ट नंबर पे लॉक कर दें। आपकी मानसिक एनर्जी पूरी तरह से बढ़ गई है। Your mental energy has increased and it is to the maximum and lock it there. इसी तरह से आप और भी डायल देख रहे हैं। जो डायल आपके लिए काम कर रहा है उस डायल को आप मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी और भी तरह की एनर्जी, स्ट्रेस की एनर्जी, उसको स्ट्रेस की एनर्जी को लोअर करें। एनर्जी जो क्रिएटिविटी की एनर्जी है उसको हाई करें। इस तरह से आप तरह तरह के डायल को वहां पे कंट्रोल पैनल में देखते हुए उसको इस्तेमाल करें और उसको लॉक करते जाएं। You can see many dials related to each and every aspect of your life, like stress, like creativity, like your own ability. You can dial those knobs to the higher number and lock it there. You will feel
Your skills have improved. You are doing a beautiful job of increasing and locking all the dials in different areas of your brain, of the control panel of your brain. Now you are in a bubble. This bubble is made of beautiful energy, which is of your favorite color. This bubble is protection bubble. अब आप अपने आप को एक बबल में महसूस करें, बहुत बड़ा सा बबल है, वो आपके फेवरेट रंग का बबल है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, ये आपका प्रोटेक्शन बबल है, इसको महसूस करें और आपके ये फ्यूचर बर्नआउट से आपको प्रोटेक्ट करेगा और इसमें बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जीज भरी हुई हैं. This bubble is full of creative energies and it will protect you from future burnout. Here in this bubble, in this control panel, you have all the control to your mind and body, to your career, to your work, to your own creativity. इस बबल के अंदर आपका कंट्रोल पैनल है, जहाँ जो आपके करियर के लिए है, आपके काम के लिए है, आपके क्रिएटिविटी के लिए है. आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं. इस बबल में आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं. यू आर रिलैक्स एंड प्रोटेक्टेड इन दिस बबल. यू फील लव. आप प्रेम को महसूस कर रहे हैं. इस बबल में आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, क्रिएटिव एनर्जी लेवल बहुत हाई हो गया है. In this bubble, your physical, emotional, and mental creativity energy levels are very, very high, high to the maximum. And this bubble is protecting you. You are the boss. आप boss हैं. Now say an affirmation. You will repeat it in your mind or that you are. You have agency over your creativity. You know how to balance work and personal life. You prioritize your health. You prioritize your well-being. You know you are safe inside the bubble. अब आप अपने मन में कहें कि एक एजेंसी है जो आपकी है. आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को, वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं. आपकी हेल्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट है. आपका अपना वजूद इम्पोर्टेंट है. आप इस बबल में पूरी तरह से सेफ हैं. Your motivation to do things you love is rising. Your motivation to practice self-care is rising. Your motivation to prioritize your well-being is rising. आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं. आप का ये जो विचार है वो बढ़ता जा रहा है. आपका प्रेम बढ़ता जा रहा है. आप हर कार्य करने की, आप अपने लिए जो भी कुछ कर रहे हैं वो फीलिंग बढ़ती जा रही है. आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं. आप स्वस्थ हैं और पूरी तरह से स्वस्थ होते जा रहे हैं. आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं. आप जहां पे भी हैं प्रोटेक्टेड हैं. आप बैलेंस्ड हैं. You are protected. You are balanced. You are safe inside your protection bubble.
every day and in every way. You are becoming more and more balanced. You are becoming more and more healthier. You are becoming more and more stress-free. You can identify when you need rest. You can identify when you need love and love yourself. अपने आप से प्रेम करें. रोज रोज करें. आपको समझ में आ रहा है कब आपको आराम की जरूरत है और आपको प्रेम की जरूरत है. आप अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे हैं. यू आर प्राउड, फीलिंग प्राउड. You are working night and day and you feel more secure, more protected. आप रात दिन काम कर रहे हैं. आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. जब भी आप इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे या इस मेडिटेशन को करेंगे, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा. आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे. आपका बर्न आउट ब्रेन फिर से रिवायर होगा और होता रहेगा. आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे. आपके सारे न्यूरॉन्स ब्रेन में फिर से डेवलप हो गए हैं. जैसे जैसे आप ये मेडिटेशन करेंगे, आपके और भी न्यूरॉन्स डेवलप होते जाएंगे. नए नए न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स और सिनेप्सेस बढ़ते जाएंगे, बनते जाएंगे, कनेक्ट होते रहेंगे. As you do this meditation every day, new neurons will be formed, new synapses and axons will be formed. You will feel more relaxed, more motivated, more stress-free, more healthier, more loving and having the feel of self-worth. You will feel more energetic. You will feel mentally and physically energetic and happy. Your happy neurons are building up. आपकी खुशी के न्यूरॉन्स बनते जा रहे हैं. आप अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं. You are feeling good, happy and safe. Now, slowly come back to your body, back. Your room should be back to your brain, up there from the feet to up in your brain. आपका ये रूम जो लिफ्ट है वो वापस ऊपर आपके ब्रेन में पहुंच गई है. इसका कंट्रोल पैनल आपके हाथ में है. This control panel is with you. All the buttons are with you. You are the boss of your control panel. आप इस कंट्रोल पैनल के बॉस हैं और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अंदर आपका फेवरेट कलर भरा हुआ है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा. अब आप इस सुरक्षित लिफ्ट के साथ हमेशा रहेंगे. इस सुरक्षित कमरे के साथ हमेशा रहेंगे. अब आप धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स करें. शरीर की ओर ध्यान दें. From now onwards, you have this beautiful lift, a beautiful room full of control panel, which you can manage. And this room is filled with your favorite color. And you can manage each and every switch
each and every panel, each and every switch in the panel with your own hands and fingers, and be happy and safe with the beautiful color inside the room. Now, slowly relax yourself. Wriggle your toe, move your hand a little bit, and open your eyes. अब आप धीरे धीरे अपने पैर को हिलाएं और अपने हाथों को हिलाएं और आंखें खोल लें. Open your eyes. Everybody Thank is you still so in. much, ma'am. Oh, you're welcome. How did you feel? Beautiful, very calming. And today I'm gonna actually mention this in the WhatsApp group कि जो Great. हम link से करते हैं और जो actually because like I have been doing it when you do it live and I repeat it later also ना बहुत difference आता है. So if people are really thinking कि हाँ अभी link available है हम बाद में कर लेंगे, I'm really today I'm gonna request them if they Wow. actually want to feel that pehla wala and powerful impact, they must come live and do it. Wow. It was very relaxing, seriously. Great. I'm so glad because I'm channeling healing energy also when I'm giving this meditation. So I'm happy that you are seeing the difference, feeling the difference between online and offline meditation. I'm so glad. I'm happy. Thank you, Sonal. Thank you, ma'am. Thank you, Neelamji. How you felt? आप म्यूट पे हैं. अनम्यूट कर लीजिए. Yeah. Thank you, Nupur ji. Thank you. You're welcome. Any experience you want to share? Your meditation always, I love this meditation. Yeah. Thank you so much. Anyone else और कोई कुछ कहना चाहता है? Yeah, I just want to say, like, it's very, what Sonal said, it's very relaxing and also very recharging. So I felt, yeah, a lot of energy as well. Great. Thank you so much, Shabana. So with this note, we end this session. Thank you very much. Thank you everyone out here, and thank you everyone around the world who is listening to this meditation, and they can practice this meditation as many times as you can, because the more you practice, the more your neurons will develop. So thank you